use that material while teaching. The right to use the content in a wide range of ways. Example, to study, to upload it on some website, or to teach in a class. Revise, right to adapt, adjust, modify or alter content itself. That means you have got something in a particular language और आप उसको modify करना चाहते हैं, किसी और language में translate करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं. एंड अब कुछ तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में उसको आप अडॉप्ट करके यूज कर सकते हैं. देन इज रीमिक्स, दैट यू कैन use certain content and then you can remix your own content with it, and then that remix content can be used for the study or teaching purpose. Redistribute, it is a right to share copies of original content, your revision or your remixes with others. So usually you give rights to the people who can use them. So according to OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, digitalized material offered freely and openly for educators, students, and self-learner to use and reuse for teaching, learning, research. OER includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content and implementation resources such as open licenses. So when you talk about OER, it is not only that कि आप विकिपीडिया है या कुछ भी लर्निंग कंटेंट जो कि इंटरनेट पे फ्रीली या क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर या किसी लाइसेंस के अंदर फ्रीली एक्सेसिबल है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर टूल जो आप यूज करना चाहें वो फ्रीली एक्सेसिबल है और जिसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीकंटेंट कर सकते हैं अंडर ओपन लाइसेंसेस. एवरीथिंग कम्स अंडर द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स. So there are different kinds of open educational resource. I have classified them. OER, there are certain OER, that is open educational resources, those who are based on media. Media के basis पे अगर इनको classify करें, that means medium के basis पे, they can be text in the form of textbook, written material, print material. They can be in form of visual or photographs. Whenever you make a PPT, you try to insert a picture in there. Then you take there, उसमें 2-3 ऑप्शंस आती हैं. आपसे पूछा जाता है कि इस पीसी में से आप पिक्चर डालना चाहते हैं, ठीक है, या आप नेट पे से पिक्चर डालना चाहते हैं. तो जो भी पिक्चर आप डालना चाहते हैं वहां पे आते हैं क्रिएटिव कॉमन्स. तो जितनी भी पिक्चर्स वहां पे अवेलेबल है, आप अगर वहां से लेते हैं, दैट इज बेसिकली visual or photographs that are open educational resources there in the which are there in the net world. Then there are certain audios that you can hear. आपने काफी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं आजकल. ऑडियो बुक्स भी पब्लिश होती हैं, प्रिंट बुक्स भी पब्लिश होती हैं. दैट इज अगेन हेल्पफुल फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर द लर्नर्स. Then there are lot of animations which are available. I'm sure जितने भी students यहाँ पे हैं, you get time to make presentations. You are supposed to make presentations and you use all kind of media. जितना भी ये यहाँ पे आप use करते हैं अपनी PowerPoint presentation बनाने के लिए, वो सब आपका open educational resources के अंदर आता है. There are certain licenses attached to it and I'm sure आप अपने कल के जो कल का आपका सेशन है उसमें आप जरूर उसके बारे में पढ़ेंगे. Next type of open educational resources are these are based on quality. कि educational resource जो आप पढ़ रहे हैं या आप इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है. Some of them are self-published, स्वयं द्वारा पब्लिश्ड है. Some of them are reviewed, that means they are reviewed by other experienced faculty or experience holder of the industry. पीयर रिव्यूड, आपके खुद के पीयर से रिव्यूड किया गया, या ऑप्शन ऑफ पोस्ट रिव्यू इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट टाइप ऑफ OBRs आर दे आर बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से आपने उसको यूज किया है. स्लाइड शेयर आप सबने देखा होगा. देर आर स्लाइड्स, दे हैव लॉट ऑफ full library of slides out there on different topics. They are based on presentation, कि आपने slide sharing में उसको use किया है. Class presentation के लिए you have used it. E-content presentation for OER या formal public presentation. How you use that content for the presentation again depends upon its type.
Another type of open educational resources which are available, they are based on licensing. Some of them are copyright protected. There are Creative Commons and there are public domains. This all you will be studying in your next, next session of FDP. That is tomorrow. Copyright issues will be taken. So what are licensing basically? When we say कि accessible है, free है, open है, फिर किस बात का license यहाँ पे है? क्यों हमें license की जरूरत है? Open educational resources often involve issues relating to intellectual property rights. Traditional education materials such as textbooks are protected under conventional copyright terms. Alternate and flexible licensing options have become available as a result of work of Creative Commons, a non-profit organization that provides ready-made licensing agreement and less restrictive than all rights reserved. Another license typically used by developer of OER software is GNU, that is General Public License from the free and open resource software community. Open licensing allow use of material that would not be easily permitted under the copyright alone. So there are certain licenses reserved so that misuse ना हो information का. आप openly accessible है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी जो है वो आपके पढ़ने के लिए है, पढ़ाने के लिए, लर्निंग के लिए है, बट मिसयूज करने के लिए नहीं है. तो वहां पे कहीं ना कहीं लाइसेंसेस आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंसेस. नेक्स्ट स्लाइड शोज डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंसेस दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंट काइंड ऑफ ओपननेस. जो पब्लिक, हेलो मैम, इज द स्लाइड विजिबल टू ऑल? मम्मी वाली बुआ का भी कोई हक बना है उनका? आपको स्लाइड्स विजिबल है? यस मैम. ओके, सो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो स्लाइड है आपकी स्क्रीन पे, इट शोज कि कैसे कैसे आपको कितना फ्रीडम है, आपका जो कॉमनली यूज्ड है या ओपन रिसोर्स है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं. जो पब्लिक डोमेन में है वो उसको आप कॉपी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, कमर्शियल यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई एंड अडेप्ट कर सकते हैं, और उसका लाइसेंस भी चेंज हो सकता है. क्रिएटिव कॉमन्स वाले जो है वो सारी डोमेन में आ जाता है. वो आप पब्लिश कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, अगर उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कमर्शियल यूज में लेके आ जा सकते हैं, मॉडिफाई और अडेप्ट कर सकते हैं, चेंज हो सकता है लाइसेंस का. सो ऐसे करके काफी सारे लाइसेंसेस हैं अलग अलग तरीके के, जिनके अंडर अलग अलग चीजें. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yeah. When you have something which is open there for the public, it has risk of getting misuse. That's why these kind of licenses are there, so that the misuse should not be there of the open resource. What is the importance of OER in today's scenario? आज के सिनेरियो में जिस तरीके से जिस डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं एजुकेशन की, देयर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय टीचर इटसेल्फ. कितनी भी डिग्री करने के बाद देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट अ टीचर फेसेस. ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच इज अ लर्नर इज फेसिंग इन टुडेज सिनेरियो. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ OER? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है आज के सिनेरियो में? फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी. हम बात करते हैं कि एजुकेशन की मेजर चैलेंज है जिसके बारे में NEP भी बात कर रही है, दैट इज एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी. दैट एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन एंड देयर शुड बी एन इक्विटी इन दैट एजुकेशन. सो एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी का जो चैलेंज है वहां पे OER ब्रेक्स डाउन दैट बैरियर. जो बैरियर है उसको OER जो है उसको ब्रेक डाउन करता है by providing free and low cost access to learning material. It also ensure more equitable access to the learner. Next is flexibility and customization. The
It helps in flexible and customization of the education. What a learner wants to learn, they can learn. There can be a flexibility in the curriculum. There can be a flexibility in the time. There can be a flexibility in the assessment process of the learner. Again, it is a cost saving. Cost saving, for example, it is a free of cost out there in a public domain. Anybody can access it. There is no need that you have to pay a huge amount of fees to it. Next is timeliness and relevance. Relevance, it is continuously updated due to the जो इतना एक्सपीरियंस है टीचर्स का या कंटेंट क्रिएटर्स का, दे टाइम एंड अगेन दे अपडेटेड एंड इट गेट्स अपडेटेड डिजिटली. आपको वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ टेक्स्ट बुक अब अपडेट होगी, इसका एडिटेड वर्जन आएगा तो ही हमें नॉलेज गेन होगी. इट इज अपडेटेड very easily and very frequently. Next is innovation and collaboration. Lot of people, lot of teachers contribute their material, and there is a collaboration in teaching world. They bring out best, they bring out innovative teaching ideas, innovating learning ideas, and innovative content for the student. Global reach and inclusivity is there. The open education resource जो है वो globally, आप Google पे अगर किसी चीज का सर्च कर रहे हैं, चाहे वो आप इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, अब्रॉड से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, एवरीबडी हैज दैट एक्सेस. आप अर्बन एरिया से करेंगे तो भी वही एक्सेस आएगा, रूरल एरिया से करेंगे तो भी वही एक्सेस आएगा. प्लस इंक्लूसिविटी इज देयर. Every language is available on the internet. Every resource can be translated to a particular language with the help of AI, with the help of Google Translate. Again, support for lifelong learning. It is not ऐसा नहीं है कि एक certain amount तक ही वहां पे है. Once it is there on the internet, it is always there over the internet, and it gives you opportunity to upskill yourself, to reskill yourself, as well as update yourself in your particular field of profession. Sustainability and environment impact. Of course, it is a sustainable. You don't have to reprint, you don't have to take the prints of it. It is there in a soft copy, which helps in which limit the use of paper, and again which is environmental friendly. So what is the scenario of open education in India? Access to quality education. India faces challenges in providing quality education due to diverse socio-economic factors. जो OER है, it helps the solution by providing free, low cost access, quality material, textbook, educational content. Thus, it bridge a gap between urban and rural educational opportunities, which we saw that while Corona, कहीं पे भी remotely भी access किया गया था आपकी education system को. Supplement curriculum, that means they supplement the curriculum with diverse material, enabling students to explore topics in greater depth, reinforce concepts, and create varied learning styles. It helps in teacher empowerment, helps enhancing the quality of teaching and learning classroom. Digital literacy skills development is also there. Modern tools, online platform, resources that prepare students for digitally driven world. That we are ending up into the education 4.0. We are entering into the ushering into the age of technology 4.0, where we are governed by AIs, chat GPTs and everything. So we have to keep ourselves more empowered, digitally skilled. Language diversity का जो barrier है, especially in context of Indian multilingualism, it helps in catering that challenge कि आपको मिल जाता है, हर लैंग्वेज का रिसोर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है. गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. स्वयं का अपना पोर्टल है, ई पाठशाला है. उसके आगे उसको हम आगे वाले आने वाली स्लाइड में भी देखेंगे. कोलैबोरेटिव लर्निंग, दैट देयर इज अ कोलैबोरेटिव there is a collaborative efforts of teaching and learning. Lot of teachers with a different diverse background come together and create a content for a multilingual and multicultural audience such as Indian audience. Continuing education and lifelong learning, it supports not just formal education, but there are a lot of things which are available on out there in the public domain for your open and as an open education resource, which help and in self improving, continuous education, retaining and
upskilling yourself. So there are these are the advantages of education resources. इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस पे नजर डालते हैं कि किस बात का हमें ध्यान रखना होगा व्हेन वी आर यूजिंग OER. कुछ डिसएडवांटेजेस OER की ये हैं. क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी आर द कंसर्न्स. आजकल कोई भी ब्लॉग डाल देता है, कुछ भी वीडियो बना के डली हुई है यूट्यूब पे. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई विथ द क्वालिटी ऑफ द वीडियो, द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट. ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत बढ़िया एडिटिंग है, दैट डजंट मैटर. द कंटेंट ऑफ द वीडियो डज मैटर. देन लिमिटेशन ऑफ कॉपीराइट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. ऑल राइट रिजर्व जो है वो कंप्लीटली रिजर्व्ड है, वहां पे आप अपना कुछ भी एक्सेस ज्यादा नहीं कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर जो है, especially in case of India, it is a technological issues. Sometimes slow internet, no accessibility to computers, digital illiteracy, they are the basic disadvantages of open education resource. Due to which accessibility, जो कि सबसे important aspect है open education resource का, कि सबको accessible है, होना इजीली एक्सेसिबल है, वो ही नहीं हो पाता क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है उसको एक्सेस करने के. So these are some of the open education resources which are available in India. One is National Repository of Open Educational Resource. It is launched by Ministry of Education. It is an initiative providing access to vast collection of digital resource for school education. It includes interactive modules, videos, audio file, map, and other material mapped to the school curriculum. School, especially higher education के लिए, it is a very good platform. स्वयं MOOCs का platform है वहां पे. स्वयं is an online platform offering free courses for student at various level. सारे लेवल्स यहाँ कवर करते हैं, राइट फ्रॉम द स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इवन आफ्टर बीइंग टीचर. इफ यू वुड लाइक टू understand certain particular terms, certain particular field, you can go and enroll yourself in MOOCs and you can have the whole course which is delivered by one of the finest faculty of India. Then it is EPG Pathshala. It is an initiative by University Grant Commission where it offers you high quality curriculum based interactive content in different subjects across the postgraduate disciplines. National Digital Library of India, यहाँ पे आपको manuscripts, audio material, articles, thesis, including books, everything is there. National Program on Technology Enhanced Learning. It is a joint initiative by IIT and Indian Institute of Sciences, where you get everything which is there, every research which is there is being published there, and it is there, you can get it from there. NCERT textbook, आप CBSE की website पे जाके, NCERT की website पे जाके, you can have a free access to these textbook right from class 1 to class 12. Apart from these textbook, there are certain handbooks which is helpful for a student as well as for the teachers. They have their own documents which are there on their website, and they are very freely accessible to everyone. Khan Academy, again, though it is not India specific, Khan Academy offers vast array of educational resources, including videos, exercises covering subjects like maths, economics, others. Diksha Portal, an initiative by Government of India. Diksha is an open learning platform that hosts diverse educational resources for teachers, students, and parents. Apart from that, if you are enrolled in some courses of IGNOU, you get free access to their e-ज्ञान कोश, जहाँ पे आपको लॉग इन करना होता है. स्वयं प्रभा चैनल्स हैं which are again accessible to everyone. NIOS का चैनल है, YouTube चैनल है. Lot of major contributions are there on YouTube also. Major channels are running. Physics Wala have their own channel. Lot of people are having free, giving you free access to the education. Some of the best open educational resources of the world. Khan Academy, again we have learned what is Khan Academy. Coursera जो है, it is a tie-up of universities and industry experts, where you get lot of courses on different topics, and you get certification from international universities such as University of Pennsylvania, University Michigan universities, other universities. हर तरीके का टॉपिक वहां पे कवर है, आप कोर्स वहां पे कर सकते हो. एक्सेसिबिलिटी, कुछ फ्री कोर्सेज है, कुछ पेड कोर्सेज हैं. edX is similar than Coursera.
MIT open courseware is there. TED, जैसे TEDx है वैसे ही TED Ed है, where you have TED talks and audio and as well as videos for education. Then you have Google Scholars. Those who are going for higher education, definitely they will be, the Google Scholar is a very important open resource where you get scholarly articles, research articles on topics. Also, we have certain search engines and certain educational other kinds of things like academia is there, and Science Direct is there. A lot of platforms are there where you can get knowledge which is open access. They sometimes only abstract you can see, sometimes you can see the full paper, and sometimes you can request for the full paper, but for students usually they are free. So these are certain platforms where you can go and you can access the information, and a lot of information is there. There are certain softwares that you can use for your data analysis, for your research purposes, for your assessment purposes. There are certain games, there are certain apps which are free, that all of them which are accessible, which are free, which is out there in the public domain. They all come under the umbrella term which we call as open learning or open educational resources of the world. So apart from that, how we can integrate this open learning resources in our teaching learning process? कैसे हम कर सकते हैं as a teacher? How can we use all these things? First of all, we should have a clear understanding of the curriculum, कि हमको पढ़ाना क्या है. We should understand the requirement of the curriculum, and then we can use this open resource for our students, as well as we can tell them to access such kind of open resources. Thorough understanding of curriculum is necessary by the teacher, because out there it is a sea of information. इतना ज्यादा information है, कई बार आपको यही नहीं समझ में आता है कि हमें कहाँ से लेना है, कहाँ पे रुकना है. तो आपके करिकुलम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, that has to be very clear. Then only you can access this open educational resources. Again, it will be beneficial for you when you will evaluate and select open OER. That means कि पहले आप evaluate करें कि कौन सा OER, कौन सा educational resource आपके लिए अच्छा है. कई बार Google Scholar किसी चीज के लिए अच्छा होता है, और कई बार सिंपल यूट्यूब इंफॉर्मेशन किसी चीज के लिए अच्छी होती है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इंफॉर्मेशन किसके लिए चाहिए, कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए सब्जेक्ट की. देन ओनली यू इवेल्युएट योर रिसोर्स एंड देन यूज इट. नेक्स्ट इज क्यूरेट एंड कस्टमाइज. अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपना एक कंटेंट क्यूरेट करें, काफी सारी चीजों को यूज करें और अपना एक कंटेंट बनाएं, अपना एक यूट्यूब बनाएं, अपना एक पीपीटी बनाएं, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ करिकुलम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, यू डेवलप योर ओन कंटेंट बाय यूजिंग अदर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. Other thing is this, one more thing that you have to keep in mind is to design and engage the learning experiences. That means